नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। सर्बिया यात्रा के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा औपचारिक स्वागत। अपने समकक्ष के साथ करेंगी प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी होगी मुलाकात। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में हुए फैसलों की घोषणा। कुछ ही देर में महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने के बाद रेपो रेट पर होंगी सबकी नजरें। और आइए कुछ ही देर चलते हैं आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। The uncertainty on the horizon appears comparatively less and the path ahead somewhat clearer. But we have to be acutely aware that the geopolitical conflict continues unabated and policy normalization globally is far from complete. Headline inflation across countries is on a downward trajectory but is still high and above the targets. Labor markets in many countries are tight and demand is rotating back from goods to services. Hence, central banks across the world remain on high alert and watchful of the evolving conditions, even though many of them have tempered their rate hikes or even taken a pause. Financial stability concerns persist in advanced economies, although they appear to have been contained due to resolute actions. Retrenchment in trade, technology, capital flows caused by geopolitical fault lines and economic fragmentation further complicate the situation. In these challenging times, the Reserve Bank of India has continued to focus on preserving price and financial stability, while ensuring adequate flow of financial resources to all productive sectors of the economy. As a result, domestic macroeconomic fundamentals are strengthening. Economic activity is exhibiting resilience. Inflation has moderated. The current account deficit has narrowed and foreign exchange reserves are comfortable. Fiscal consolidation is also ongoing. The Indian banking system remains stable and resilient. Credit growth is robust and domestic financial markets have evolved in an orderly manner. Let me now turn to the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As many of you would be aware, the Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and 8th June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility and the bank rates, they stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on both policy rate as well as the stance. The MPC recognized that the pace of global economic activity is expected to decelerate in 2023, that's in the current year. And this is mainly because it is getting dragged down by elevated inflation, tight financial conditions and geopolitical tensions which are still continuing. The pace of monetary tightening has slowed in recent months, but uncertainty remains on its future trajectory as inflation continues to rule above targets across the world. And in the last few days, you would have noticed that 2 major central banks have, after adopting a pause for several months, they have gone for increasing the policy rates. So therefore,
What I am saying is that the monetary policy, the pace of monetary policy has slowed, tightening of monetary policy has slowed down, but uncertainty remains on the future trajectory as inflation continues to roll above targets across the world. In India, consumer price inflation eased during March-April 2023 and moved into tolerance band, declining from 6.7% last year, that is 22-23. Headline inflation, however, is still above the target as per the latest data and is expected to remain so according to our projections for 23-24. So when I say headline inflation is still above the target, I am referring to headline inflation as per our assessment will remain above 4% throughout 23-24. Therefore, close and continued vigil on the evolving inflation outlook is absolutely necessary, especially as the monsoon outlook and the impact of El Nino remain uncertain. Real GDP growth in 2022-23, on the other hand, turned out to be stronger than anticipated and is holding up well. The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. With the policy repo rate at 6.5% and full year projected inflation for 23-24 at just a little above 5%, the real policy rate continues to be positive. The average system liquidity, however, is still in surplus mode and could increase as rupees 2,000 banknotes get deposited in the banks. Headline inflation, as noted before, is easing but rules above the target, warranting close monitoring of the evolving price dynamics. Taking all these factors into account, the Monetary Policy Committee decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. I would now proceed to provide our assessment of growth and inflation. Let me first focus on growth. India's real gross domestic product, that is real GDP, recorded a growth of 7.2% in 2022-23, stronger than the earlier estimate of 7%. It has surpassed its pre-pandemic level by 10.1%. Real GDP growth in the fourth quarter of 22-23 accelerated to 6.1% year-on-year from 4.5% in the third quarter of last year, aided by fixed investment and higher net exports. On the supply side, real gross value added, that is GVA, accelerated from 4.7% in Q3 to 6.5% in Q4, driven by rebound in manufacturing activity, which moved into expansion territory after 2 quarters of contraction. Turning to 23-24, domestic demand conditions remain supportive of growth on the back of improving household consumption and investment activity. Urban demand remains resilient with indicators such as passenger vehicle sales, domestic air passenger traffic, and credit cards outstanding posting double-digit expansion on year-on-year basis in the month of April. Rural demand is also on a revival path. Motorcycle and three-wheeler sales increased at a robust pace year-on-year in April, while tractor sales remained subdued. Growth in steel consumption
and cement output and production and imports of capital goods suggest continued buoyancy in investment activity. On the back of double-digit growth of 15.6% in non-food bank credit, the flow of resources to commercial sector in the current year, that is 2023-24, up to May 19th, increased to 2.7 lakh crore from 1 lakh crore during the same period last year. Fixed investment by manufacturing companies expanded in 22-23, reversing the contraction seen in 21-22. Our surveys also point towards higher investment intentions of manufacturing companies for 23-24, that is for the current year. The contraction in merchandise imports outpaced that of merchandise exports in April, resulting in a narrowing of trade deficit. Coupled with sustained and strong growth in services exports, the drag from net exports on growth is easing. On the supply side, the 8 core industries output expanded by 3.5% year on year in April, compared with 3.6% in the month of March. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, exhibited sustained expansion, rising to 58.7 in the month of May, which is a 31-month high. Available high-frequency indicators suggest that services sector activity has remained on an accelerating trajectory. PMI services remained in strong expansion at 61.2 on top of 62 in April. Looking ahead, higher Rabi crop production, expected normal monsoon, continued buoyancy in services and softening inflation should support household consumption. On the other hand, given the healthy twin balance sheets of banks and corporates, supply chain normalization and declining uncertainty, conditions are now favorable for the capex cycle to gain momentum. Robust government capital expenditure is also expected to nurture investment and manufacturing activity. Consumer and business outlook surveys display continued optimism. The headwinds from weak external demand, volatility in global financial markets, protracted geopolitical tensions, and intensity of El Nino impact, however, pose downside risks to the outlook so far as growth is concerned. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%, with risks evenly balanced. Let me just give the figures once again. So the GDP growth, real GDP growth projection for the current year 23-24, the projection that we are making is 6.5%, and the quarterly breakup is as follows. The first quarter, the estimate is that it would be 8%, second quarter 6.5%, third quarter 6%, and fourth quarter 5.7%, and the risks are evenly balanced. Let me now turn to inflation. Headline CPI inflation has come down during March-April 2023 to 4.7% in April, the lowest reading since November 2021. Monetary policy tightening and supply side measures contributed to this process. The easing of inflation was observed across food, fuel, and core, that is the CPI excluding food and fuel categories. That means all categories of headline inflation witnessed easing of the inflation pressures. Food inflation declined to 4.2% in April, while core inflation moderated to 5.1%. Durable
a durable disinflation in core component would be critical for a sustained alignment of the headline inflation with the target. Going forward, with the recent Rabi harvest remaining largely immune to adverse weather events, the near-term inflation outlook looks more favorable than at the time of the last MPC meeting in April. The forecast of a normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department (IMD) augurs well for the Kharif crops. Uncertainties, however, remain on the spatial and temporal distribution of monsoon and the interplay between El Nino and the Indian Ocean dipole. Geopolitical tensions, uncertainties around the monsoon and international commodity prices, especially sugar and rice and also crude oil, and the volatility in global financial markets pose upside risks to inflation. Taking into account these factors and assuming a normal monsoon, CPI headline inflation is projected at 5.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. As noted in the April statement, the decision to pause was based on the need to assess the cumulative impact of past monetary policy actions while charting out our future course. Subsequent incoming data suggest that while risks to near-term inflation have moderated somewhat, pressures remain during the second half of the year, which needs to be watched and addressed at the appropriate time. According to our survey, inflation expectations of households for 3 months to 1 year ahead horizon have moderated by 60 to 70 basis points since September 2022. This would indicate that anchoring of expectations is underway and that our monetary policy actions are yielding the desired results. This also provides us the space to keep the policy rate unchanged in this meeting of the MPC. At the same time, given the uncertainties, we need to maintain Arjuna's eye on the evolving inflation scenario. Let me re-emphasize that headline inflation still remains above the target, and being within the tolerance band is not enough. Our goal is to achieve the target of 4% going forward. As Mahatma Gandhi had said, the ideal must not be lowered. The continuation of stance of withdrawal of accommodation should be seen from this perspective. I would now like to turn to liquidity and financial market conditions. Surplus liquidity has, as reflected in average daily absorptions under the LAF at rupees 1.7 lakh crore during April-May, was lower than 2.9 lakh crore rupees during the full year 22-23. The shrinkage in surplus liquidity during April-May was, among other things, due to maturing of the TLTROs which we had extended, which we had given during COVID times. The seasonal expansion in currency in circulation and build-up of government cash balances during this period also moderated surplus liquidity. Since the third week of May, however, the decline in currency in circulation and pickup in government spending have expanded system liquidity. This has got further augmented due to the Reserve Bank's market operations and the deposit of rupees 2,000 bank notes in the banks. The prevalence of surplus liquidity amidst higher recourse to marginal standing facility MSF by some banks suggest skewed liquidity distribution within the banking system. To address this situation, the Reserve Bank conducted a 14-day variable rate auction, that is a VRR auction, amounting to rupees 50,000 crore as part of its main operation on May 19, 2023.
similar to two such auctions conducted earlier in February and March this year. Reflecting swiftness in its liquidity action, the Reserve Bank conducted a 14-day variable rate reverse repo auction. The earlier one I referred to was variable rate repo auction. Now I am referring to variable rate reverse repo auction, which is VRRR. So reflecting the swiftness in its liquidity action, the Reserve Bank conducted a 14-day variable rate reverse repo auction, that is a VRRR auction of 2 lakh crore on June 2nd. And thereafter we have gone on to conduct a 4-day VRRR auction of 1 lakh crore on June 5th, a 3-day VRRR auction of 75,000 crore yesterday, day before, that is on June 6th, and a 2-day VRRR auction, let me say, a VRRR auction of 75,000 crore on June 7th. Now this was done considering the overall buildup of surplus liquidity. The response to these auctions, these VRRR auctions, has been cautious in, as per our experience, that is these VRRR auctions which we conducted over a period of last 4 or 5 days. The response from the banks has been fairly cautious. Going forward, the Reserve Bank will remain nimble in its liquidity management while ensuring that adequate resources are available for the productive requirements of the economy. The Reserve Bank will also ensure the orderly completion of the government market borrowing program in the current year. The moderation in system liquidity along with its skewed distribution was reflected in firming up of money market rates even beyond the repo rate on a few occasions before they came down from May 18 to sub-repo rate levels. Long-term rates have, however, remained broadly stable. This has led to sharp compression of term spreads in the recent period. The relative stability of long-term yields augurs well for the economy and suggests effective anchoring of market-based long-term inflation expectations. I would now like to briefly talk about the external sector. In recent months, the trade deficit has narrowed on the back of sharper decline in imports vis-a-vis exports. India is making resolute strides to achieve the $1 trillion merchandise export target by 2030 by focusing on diversification of markets and products, leveraging free trade agreements, strengthening manufacturing capacity and competitiveness by participating in value chains, and through schemes such as the production linked incentive across sectors. Service exports and remittances have provided valuable support to India's external sector viability. During 22-23, services exports grew faster at 27.9% than merchandise exports, which grew by 6.9%. The current account deficit, that is expected to have moderated further in Q4 22-23 and should remain eminently manageable even in 23-24, that even in the current year also. On the financing side, foreign portfolio investment, that is FPI flows, have seen significant turnaround this year since April, that is in 23-24, led by equity flows. The net FPI inflows stand at $8.4 billion during the current financial year up to 6th of June, as against net outflows in the preceding 2 years, and the net outflows in the preceding 2 years were $14.1 billion in 21-22 and 5.9 billion last year in 22-23. Net FDI flows to India were $28 billion in 22-23 compared to $38.6 billion in the previous year. Preliminary data for April 23 suggest that FDI flows have also improved. Net inflows under non-resident deposits
net resident inflows under non-resident deposits increased to $8 billion during 22-23 from $3.2 billion in the previous year. The Indian rupee has remained stable since January this year. Overall, India's external sector remains resilient as key indicators such as current account deficit to GDP, external debt to GDP and international investment position IIP to GDP, all these ratios continue to improve. Foreign exchange reserves stood at a comfortable level of $595.1 billion as on 2nd June this year. Inclusive of net forward assets, our foreign exchange reserves are well above $600 billion. I shall now announce certain additional measures. There are about 8 additional measures and I think all of them are quite important. So I request your patience for some more time. The first announcement relates to borrowing in call and notice money markets by scheduled commercial banks. The extant regulatory guidelines prescribe prudential limits for outstanding borrowing in call and notice money markets for scheduled commercial banks. With a view to providing greater flexibility for managing their liquidity, it has been decided that scheduled commercial banks, excluding small finance banks, can set their own limits for borrowing in call and notice money markets within the prescribed prudential limits for interbank liabilities. Second announcement relates to widening the scope of framework for resolution of stressed assets. Compromise settlements is recognized as a resolution mechanism in respect of non-performing assets, that is NPAs, under the prudential framework of the Reserve Bank, which is currently applicable to scheduled commercial banks and select NBFCs. It is proposed to issue comprehensive guidelines on comprehensive settlements and on technical write-offs, which will now be made applicable to all regulated entities, including the cooperative banks. Further, it is also proposed to rationalize the existing prudential norms on restructuring of borrower accounts affected by natural calamities. The next announcement relates to a default loss guarantee arrangement in digital banking, popularly what is known as the FLDG in digital banking. The Reserve Bank had issued the regulatory framework for digital lending in August-September last year. With a view to further promoting responsible innovation and prudent risk management, it has been decided to issue guidelines on default loss guarantee arrangements in digital lending. This will further facilitate orderly development of digital lending ecosystem and enhance credit penetration in the economy. The next announcement relates to priority sector lending targets for primary urban cooperative banks. The Reserve Bank has undertaken several initiatives in recent years to strengthen the urban cooperative bank sector, that is the UCB sector, as well as to deepen financial inclusion. Such initiatives include revision of the priority sector lending targets for UCBs in 2020. While revising the priority sector lending targets, a glide path up to March 2024 was provided for a non-disruptive transition to achieve the revised targets. While a number of UCBs, that is urban cooperative banks, have met the required milestones as on March 2023, a need has arisen to ease the implementation challenges faced by the other UCBs. It has therefore been decided to extend the time frame for achieving the targets by 2 more years, that is up to March 2026. Further, urban cooperative banks, UCBs, which have met the targets as on 31st March 2023 shall be suitably incentivized. The next announcement relates to rationalization of the licensing framework for authorized persons
under Foreign Exchange Management Act, that is FEMA. The licensing framework for authorized persons issued under FEMA was last reviewed in March 2006. Keeping in view the developments including progressive liberalization under FEMA over the last several years and to effectively meet the emerging requirements of the rapidly growing Indian economy, it has been decided to rationalize and simplify the licensing framework for these authorized persons. This is expected to improve the efficiency in delivery of foreign exchange facilities to various segments of users, including common persons, tourists and businesses. The next announcement relates to expanding the scope and reach of e-rupee vouchers. At present, purpose-specific e-rupee digital vouchers are issued by the banks. It is now proposed to expand the scope and reach of e-rupee vouchers by permitting non-bank prepaid payment instruments issuers, that is PPI issuers, to issue e-rupee vouchers. It is also proposed to enable issuance of e-rupee vouchers on behalf of individuals and to simplify the process of issuance, redemption and a few other aspects of the current framework. These measures will make the benefits of e-rupee digital voucher accessible to a wider set of users and further deepen the penetration of digital payments in the country. Next announcement relates to streamlining the Bharat Bill Payment System processes and membership criteria. The Bharat Bill Payment System, that is BBPS, is operational since August 2017. The scope of BBPS was further expanded in December 2022, that is December last year. To further enhance the efficiency of the BBPS system and to encourage greater participation, it is proposed to streamline the process flow of transactions and membership criteria for operating units. The next announcement, and I think that's the last one, relates to internationalizing issuance and acceptance of the RuPay cards. RuPay debit and credit cards issued by the banks in India are gaining increased acceptance abroad. It has now been decided to permit issuance of RuPay prepaid forex cards by the banks. This will expand the payment options for Indians traveling abroad. Further, RuPay cards will also be enabled for issuance in foreign jurisdictions. These measures will expand the reach and acceptance of RuPay cards globally. Let me now conclude, and there are some important messages in this concluding para, so I request again your patience for just a couple of minutes. तो आप सुन रहे थे आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने जो फैसला लिया है उस पर आरबीआई गवर्नर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अहम बड़ी बातें आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रेपो दर है जो कि 6.5% है वो उस पर यथास्थिति को बरकरार रखा गया है, अपरिवर्तित रखी गई है, उन पर कोई चेंज नहीं है। और जो जीडीपी ग्रोथ का उन्होंने आकलन दिया है इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 का वो 6.5% का है। उन्होंने साफ तौर पर कहा आरबीआई गवर्नर साहब ने कि कैसे जब हम सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करते हैं, यानी अगर आम भाषा में हम महंगाई दर को देखें जो कि आम जन से जुड़ा हुआ सबसे अहम फैसला होता है, हमने देखा कि वो लगातार ईज होती हुई घटती हुई नजर आ रही है। इसलिए उसका जो प्रोजेक्शन जो अनुमान जताया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष के लिए वो 5.1% है। हालांकि उन्होंने उसको बाद में ब्रेकअप करके Q1, Q2, Q3, Q4 के बारे में भी अलग अलग आंकड़े दिए। बड़ी बात एक बार फिर से आपको बताएं, रेपो रेट जो कि 6.5% है अपरिवर्तित है और ये दूसरी बार है जब एमपीसी कमेटी ने दरों को अपरिवर्तित रखा। दूसरी अहम चीज कि 2000 के नोट बदलने के बाद ये पहली बार है जब मौद्रिक नीति की घोषणा हुई और इसका असर साफ तौर पर जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बैंकों में और मार्केट्स में लचीलापन, लिक्विडिटी जिसे कहते हैं वो साफ तौर पर देखी जा रही है।
जो अन्य बड़ी बातें कही हैं उनमें उन्होंने ये भी कहा कि जब हम वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को देख रहे हैं उसमें दो सेंट्रल बैंक्स, हमने देखा कि किस तरह से जो फेडरल रिजर्व है उसने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, अगर उन सभी परिदृश्यों को देखा जाए जिसमें जियोपॉलिटिकल तमाम जो फैक्टर्स हैं, क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं, हम रुपए की चाल की बात कर रहे हैं, हम डॉलर की मजबूती की बात कर रहे हैं, हम मॉनसून यानी एल नीनो के साथ साथ मॉनसून कब और कैसे दस्तक देगा, इन तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको जब हम ध्यान में रखते हैं उस लिहाज से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कई देशों से बेहतर है। निवेश हो रहा है और निवेश का जो नजरिया साफ तौर पर आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जब हम तमाम ऑटो सेल्स को देखते हैं, क्योंकि ये सब रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, अगर इस वक्त हम सेंसेक्स पर भी नजर डालें जो तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, चाहे आप ऑटो की बात कर लीजिए, चाहे आप बैंकिंग की बात कर लीजिए, ये तमाम सेक्टर्स इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, हमने देखा कि ऑटो सेल्स में जो खास तौर पर टू व्हीलर्स का पैसेंजर व्हीकल सेक्शन है उसमें हमने लगातार बढ़ोतरी होती हुई देखी है, जो डबल डिजिट की बढ़ोतरी का वो जिक्र कर रहे थे। और सभी जो 6 एमपीसी की जो सदस्य थे, जो मौद्रिक नीति बनाने वाली जो पूरी टीम है उसमें 6 के 6 सदस्य इसी पक्ष में थे कि ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा जाए और विड्रॉवल ऑफ एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस यानी जब हम जानते हैं कि मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी है तो उसको कैसे धीरे धीरे टाइट किया जाए, इस स्तर और इस रुख के साथ जो आरबीआई गवर्नर साहब है वो चल रहे हैं। हालांकि महंगाई दर जो है वो 5% रहने का अनुमान जताया गया है 2024 का। अगर जिक्र किया जाए एल नीनो का जो असर है वो जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया और साफ तौर पर कुछ मेजर्स के बारे में भी बताया, उसको भी आप तक साझा कर देते जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं। उन्होंने कुछ मेजर्स जो अंत में बताए उसमें से ये है कि कैसे जो रुपए कार्ड है जिसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अब लगातार बढ़ती जा रही है तो उसका फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन जो है उसमें भी उसमें मान्यता प्राप्त हो, इसका जिक्र उन्होंने किया। जो लगातार, क्योंकि हम डिजिटल लेन देन बहुत आजकल हम करते हैं, यूपीआई एक इस तरह का सिस्टम, इंटरफेस सिस्टम है जो उदाहरण के तौर पर बाकी लोग भी, बाकी देश भी भारत से लेना चाहते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि डिजिटल बैंकिंग की गाइडलाइंस को और मजबूत बनाया जाएगा। और स्ट्रेस्ड एसेट्स जो कि सबसे बड़ा मुद्दा होता है बैंकिंग सिस्टम के लिए, उसमें उस फ्रेमवर्क को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए उसको लेकर भी उन्होंने बात की। और कैसे कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो वो अपने लिमिट सेट कर सकते हैं लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, हालांकि इसमें उन्होंने अभी छोटे बैंकों को इससे बाहर रखा है। तो बड़ी बात कि जो आरबीआई पॉलिसी रिलीज की गई है उसमें जो रेपो दर है वो अनचेंज्ड है, जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.5% रखी गई और महंगाई दर 5.1%। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया यात्रा का आज दूसरा दिन। भारत के किसी भी राष्ट्रपति की ओर से पहली बार सर्बिया का दौरा किया जा रहा है और कई मायनों में हम लगातार आपको बता रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रपति मुर्मू का सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति अपने समकक्ष सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान भारत और सर्बिया के परस्पर हितों के बारे में बात होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति
मुर्मू सर्बिया के प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के स्पीकर के साथ भी मुलाकात करेंगी। माउंट अवाला में एक वीर स्मारक पर माल्यार्पण भी किया जाएगा। उनकी यात्रा का उद्देश्य व्यापार अवसरों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों को प्रोत्साहित करना है। भारत और सर्बिया के बीच ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और राष्ट्रपति का ये दौरा संबंधों को मजबूती देगा। इससे पहले कल बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। उन्होंने सर्बिया और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों का भी जिक्र किया है। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संबंधों में और मजबूती आने की बात कही है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत इस दशक के अंत से पहले विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत और सर्बिया दोनों प्राचीन देश हैं। आधुनिक युग में सर्बिया के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से नॉन अलाइंड मूवमेंट के संदर्भ में मजबूत हुई है। भारत और सर्बिया ने हमेशा एक दूसरे के हितों को समझा है। दोनों देश ने अक्सर प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया है। भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सहयोग कार्यक्रम में सर्बिया एक महत्वपूर्ण भागीदारी रहा है। आईसीटी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, टेक्सटाइल्स, रूरल डेवलपमेंट, पर्यावरण, लोकतंत्र, योगा और आयुर्वेद के क्षेत्रों में हमारे हाईटेक कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम के तहत कई सर्बियन नागरिक प्रशिक्षण प्राप्त करके लाभान्वित हुए हैं। सर्बिया के श्रम, रोजगार और सामाजिक नीति मंत्री निकोल सेलोकोविक ने दूरदर्शन संवाददाता मंजू मीना से विशेष बातचीत में भारत की राष्ट्रपति की पहली सर्बिया यात्रा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना पर आधारित रिश्तों की आधारशिला और मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान में इजाफा होगा। Well, I am feeling more than proud. This is a historical moment for Indian and Serbian relations. We are traditionally old, good friends and partners. India is one of the most friendly countries to the Republic of Serbia worldwide. To wish a very welcome to Madam President. I am quite sure that in all the meetings and the dialogue which is going to be established with our President Alexander Vučić, the historical steps are going to be made in profounding our traditionally good relations and our friendship, which is dating from the time of President Tito. गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। 62 एकड़ भूमि में फैले इस मंदिर को 2 चरणों में 33 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। वहीं प्रतिष्ठित परियोजना में कई तीर्थ सुविधाएं और अन्य शैक्षिक और विकासात्मक बुनियादी ढांचे जैसे वेद पाठशाला, कक्षाएं, छात्रावास भवन और स्टाफ क्वार्टर, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा परिसर, कल्याण मंडपम, वाहन मंडपम शामिल हैं। केंद्र में 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सरकार की ओर से हर विभाग की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रधानमंत्री ने कहा, एक स्वस्थ भारत के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। अब ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस कल्याण की यात्रा में कोई भारतीय पीछे ना हो। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अगरतला के चारीपाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का दौरा किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री के अगुवाई में उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया, जिसकी वजह से जीवन की सुगमता और आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। भारत दौरे पर आए जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने जर्मनी के उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का दौरा किया। इस दौरान मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली एक विस्तृत
प्रस्तुति दी गई। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस को यार्ड सुविधाओं से भी अवगत कराया गया। इसरो द्वारा बेंगलुरु में आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय स्मॉप्स 2023 सम्मेलन में भारत के अंतरिक्ष मिशन के प्रख्यात वैज्ञानिक और प्रशासक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में रॉस कॉस्मोस, JPL, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अंतरिक्ष में भारत के स्टार्टअप के स्पीकर्स दिखाई देंगे। अंतरिक्ष मिशन और संचालन पर नवाचार और समाधान पर पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। अरब सागर के ऊपर बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय और तेज होगा और उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। ये ताजा बयान आया है मौसम विभाग का। वैज्ञानिकों के अनुसार आज सुबह 5:30 बजे गोवा से लगभग 860 किलोमीटर पश्चिम और मुंबई से 910 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ये केंद्रित था और अब ये तेज होगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में ये तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। हालांकि अभी तक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर इसके किसी बड़े प्रभाव को लेकर कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया। इस साल अरब सागर में आया ये पहला चक्रवाती तूफान है। आज विश्व महासागर दिवस है और इस मौके पर चेन्नई में आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समुद्र तट पर सफाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस साल विश्व महासागर दिवस की थीम प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग है। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य विश्व में महासागरों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, बायोडाइवर्सिटी, परिस्थिति से जुड़े संतुलन, जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विश्व महासागर दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अगुवाई में विभिन्न संगठन चेन्नई में न केवल समुद्र तटों को साफ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बल्कि ये संदेश भी दे रहे हैं कि कैसे हमारे महासागरों और तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाया रखा जाए। On this very important World Ocean Day, how to keep our beaches clean, how to make the entire coastal lines, entire coastal regions of India clean and also sustainable, and also to ensure that all our activities are very friendly to the lives which are existing in the ocean, because the lives in ocean is directly connected with the lives of the human being. Offshore, onshore, we are connected to each other. एयर इंडिया की फ्लाइट AI 173D ने सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को लेकर वो रूस के मैडगन एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुकी है। एयर इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए विशेष तैयारियां की। फ्लाइट AI 173D ने नई दिल्ली से सुबह करीब 4:23 पर सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण इसे मंगलवार को रूस के मैडगन एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतरना पड़ा। इस फ्लाइट में 216 यात्री और चालक दल के 16 सदस्य सवार थे। भारत अमेरिका सामरिक व्यापार वार्ता की पहली बैठक वाशिंगटन DC में आयोजित की गई। बैठक में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का सह नेतृत्व अमेरिकी वाणिज्य विभाग में उद्योग और सुरक्षा के अंडर सेक्रेटरी एलन नेस्टरवेज और अमेरिकी विदेश विभाग में राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया न्यूलैंड द्वारा किया गया। इस दौरान सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और बायोटेक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यापार को सुगम बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कार्यशाला और अन्य गतिविधियों के माध्यम से निर्यात नियंत्रण प्रणाली के बारे में उद्योग, शिक्षा जगत, अन्य संबंधित पक्षों के बीच जागरूकता बढ़ाने का फैसला किया। इसके अलावा दोनों देश एक नियमित निगरानी समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए, जो द्विपक्षीय उच्च तकनीक, व्यापार और टेक्नोलॉजी साझेदारी में सहयोग को गहरा करने में प्रगति की समीक्षा करेगा। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से बातचीत जारी रखने पर भी
सहमति बनी है। खबर बांग्लादेश से, और इन दिनों जो कि बिजली संकट से जूझ रहा है, राजधानी ढाका और देश के कई अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिजली की कमी देखी जा रही है। ढाका के अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली कटौती की खबरें भी आ रही हैं और इसी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश की पावर ग्रिड कंपनी PGCB के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति मांग से 25% कम है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के बाद से बांग्लादेश के लिए सबसे खराब बिजली संकट है। देश के कई बिजली उत्पादन संयंत्र बंद करने से बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीते सोमवार को तकनीकी कारणों से 50 बिजली संयंत्र बंद कर दिए गए। वहीं 51 बिजली संयंत्र ईंधन की कमी के कारण ठीक से बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे। इसके अलावा लू और विदेशी मुद्रा की कमी जैसी समस्याओं ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। लू के प्रकोप को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया और इसके साथ ही पिछले 12 महीनों के दौरान बांग्लादेश की मुद्रा टका के मूल्य में 15% से अधिक की गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस साल मई में घटकर 30 अरब डॉलर के आसपास है, जो पिछले साल जुलाई में 45 अरब डॉलर था। खबर अफगानिस्तान से, जब बुधवार को एक वैन खाई में जा गिरी और इस हादसे में 8 बच्चों और 12 महिलाओं समेत 24 लोगों की मौत हुई है। सरेपोल प्रांत के प्रवक्ता पुलिस से जुड़े हुए दीन मोहम्मद नजारी ने बताया कि चालक की लापरवाही से वैन सड़क से खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 24 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना के कारणों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन की घोषणा की। अपनी वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि संभावित नकारात्मक दिनों के जोखिमों को कम करने में ब्रिटेन अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सुनक आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने बताया कि ब्रिटेन वर्ष की दूसरी छमाही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विश्व का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। सुनक ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे जीवन को बेहतर बनाने में अविश्वसनीय क्षमता है और हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इसका उपयोग सुनिश्चित, सुरक्षित और संरक्षित तरीके से किया जाए। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज दूसरा दिन। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 327 रन बनाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा को 0 पर आउट कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर ने 43 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का वो शिकार बने। मार्नस लाबुशेन को 26 के स्कोर पर मोहम्मद शामी ने आउट किया। हालांकि इसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ के बीच 251 रन की साझेदारी देखने को मिली। ट्रेविस हेड ने अपना पहला शतक पूरा किया। वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। दिन का खेल खत्म होने तक स्मिथ 95, हेड 146 रन बनाकर नाबाद रहे। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम में फ्रेंच ओपन में आज महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यन सबालेंका का सामना गैर वरीयता प्राप्त कैरोलिना मकोवा से। सबालेंका ने सेमीफाइनल में जहां एलिना स्वितोलिना को हराया, वहीं मकोवा ने अनास्तासिया पाव्लोचेंकोवा को हराकर अंतिम 4 में किया प्रवेश। महिला एकल के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और गत विजेता इगा श्वांतेक का सामना ब्राजील की ब्रिटीज हद्दाद से। श्वांतेक ने प्रतियोगिता में अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे फ्रेंच ओपन खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाया है। उन्होंने सेमीफाइनल में पिछली बार की उप विजेता कोको गॉफ को सीधे सेट 6-4, 6-2 से हराया। वहीं पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची ब्रिटीज हद्दाद ने क्वार्टर फाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त ट्यूनीशिया की ऑन ज़ेब्यूर को हराने में सफलता पाई। मुकाबले को उन्होंने 3-6, 7-6, 6-1 से नाम किया। तो अगर आप अपनी सुंदरता को बरकरार रखना चाहते हैं और चेहरे पर निखार चाहते हैं तो योग की एक ऐसी मुद्रा है जो आपके लिए सहायक साबित हो सकती है। क्या है वो योग मुद्रा? आज के इस योग सूत्र में बता रही हैं आचार्य प्रतिष्ठा। आप इसका आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।